para sa operation niya bukas. Ano ba sinabi ko sa'yo? Huwag ka lalapit kay Velma. Bye, friend! Umalis ka. Hindi na ako basta-basta maaalis sa eksena. Pagkatapos ng operasyon, susubukan ko uling lasunin ang utak niya. Paano kung mabura yung alaala ko? Paano kung hindi kita makilala? Natatakot ako. Natatakot ako sa operasyon eh, Velma eh. Ano kung may masama mangyari kay Velma, pare? Ay, mukha kayanin yun, pare. Eh, dapat pagtapos ng operasyon nyo, nakangati pa rin kayo, ha? Dok, kayo na pong bahala sa kanya. Hindi ko mapapangako. Pero pipilitin ko na maalala ko kayong lahat paglabas ko rito. Kamusta po? Tapos na po ba yung operasyon? Successful yung operation. Si Diyos! No! 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 So disappointed ka, bad trip, kasi na-survive ni Velma yung surgery. Obviously. Ano pa nga ba? Hazel, sinabihan na kita. You can't just wish death on anyone. Velma isn't just anyone. Panira siya sa buhay ko. Kung wala nga lang akong takot sa Diyos, hindi ko lang i-wish na mamatay na siya. Kundi gagawin ko na. Pag ginawa mo yan, sinasabi ko sa'yo, I'll be out of your life. Siyempre hindi ko gagawin. Basta Alice, balitaan mo ako, okay? Alamin mo kung kailan ako pwedeng bumisita kay Velma, yung wala masyadong bantay. No. Alice, please. Fine, susubukan ko pero Thank you. Nurse! 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 Nurse, gising na yung pasyente. Nurse! Gising na yung pasyente. Tay, ano ulit? Sabi ko naman kasi sa inyo kanina, huwag muna tayo umuwi. Yan tuloy, wala tayong nang magising si nanay. Hindi namin marinig eh. Tay, Oo nga, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Tatay Tay. Hello po. Ano ulit yon? Anak, yung sabi ko kanina, parang wala sa sarili yung nanay niyo kanina pagising eh. Parang lutang siya. Pero, okay naman po si nanay, no, Tay? Okay lang naman daw yun kasi ang sabi ng doktor, namamaga lang daw yung utak niya pero binigyan naman na siya ng gamot. Pero tayo sabi niyo, Nauutal si nanay? normal daw yun. Kailangan lang naman daw i-therapy. Pero tay, ano pong sinabi sa inyo ni nanay? Wala naman. Velma, sabi ko sa'yo, walang masama mangyayari. Mahal. Nawa. Pero paulit-ulit niyang binanggit yung mga pangalan niyo. Ay, Kuya Manuel, umiiyak ka ba? Ha? Ano? Oo, kasi hindi, Didang, alam mo, masaya lang ako kasi nandito ako nung nagising si Ate Velma mo. Si tatay talaga, oh. O, sige na, anak, ha? Tatawag na lang ulit ako. Sige po. Tay, ingat, ha? Ay, Tay. Teka lang, kuya. Yung mga bata lang po ba ang binabanggit? Ako po, hindi po ba ako hinanap? Kuya Manuel? Ha? Hindi. Ang sungit naman ni kuya. Ano ba, oh? Galit? Galit? Pero huwag mo kakalimutan. Hindi ko kakayanin.
Pagod ka na. Takot. Baka kailangan magpahinga ka na muna. Huwag ka na mag-alala kay Kelma. Tingnan mo, ligtas na siya. Hindi ko kailangan yan. Manuel naman. Tingnan mo yung itsura mo. Kung nasa mo... Sabi nang hindi ko kailangan yan eh. Nagmamagandang loob lang naman ako. Manuel, gusto na kitang damayan. Naalala ko kasi, nandun tayo sa ICU. Nandun si Jessica. Nararamdaman ko rin kung ano nararamdaman mo ngayon. Kaya, dadamayan kita. Dahil kailangan mo ng tao magpapalakas ng loob mo. Huwag mo nang ungkatin si Jessica. Matagal na nananahimik sa langit yung anak ko. Tama na. Ano, umalis ka na. Ano? Aalis ka ba o tatawag ako ng guard? Manuel, ba't ka na? Ganyan ba kadali para sa'yo na ipahiya ako? Bastusin ako. Ganun na lang kadali sa'yo. Isel, hindi ka naman mapapahiya eh. Hindi ka mababastos. Basta naiuan mo na lang kami. Ano, alis ka ba hindi? Kung ako sa'yo, Hazel, umalis ka na. Kinausap ko na yung ospital. I already told them to deny your entry. Papunta na rin dito yung mga guards. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Bago ka pa nila, kalat ka rin. Pinagtutulungan niyo ba ako? Ano to? Bigla na kayo nagkasundo? Mula sa magkaribal kayo, ngayon what? Bro? Ano bang gusto mong gawin ko? Aawahin ko si Noah? Kagaya ng ginawa mo kay Felma? Ha? Yun ba yung gusto mong mangyari? Hindi. Pero Manuel, ganito ka close? Ano to? Bromance? Kailan pa? Ha? Bakit? Ano nangyari? We don't owe you any explanation, Hazel. Hazel, labas ka dito, hindi ka kasali. Napaka-unfair mo. Kayo ni Noah na dating magkaribal. Siya pwede dito. Siya pwede pumapel. Samantalang ako. Kami ni Felma magkaribal din. Pero ako yung asawa mo. Gusto kitang damayan, kaya ako nandito. Isel, kahit kailan, hindi mo naging karibal si Felma. Dahil si Felma lang yung mahal ko. Siya noon, siya ngayon. Siya lamang. Bunso, ano na namang winish mo sa falling star? Ate, hindi. Nag-thank you lang ako kay Lord kasi gising na si nanay. Ate, baka pwede tayong pumunta ng ospital. Gusto ko na talaga makita si nanay eh. Ako rin naman gusto ko siyang makita. Bukas na. Tapos na ang visiting hours. Ate, pamilya naman tayo, hindi bisita. Ate, sige na, please. Tawagin ko si Kuya, papadrive tayo sa kanya. Bunso, huwag ka na makulit. Bukas na. Gusto ko lang naman maging sure na okay talaga si nanay. Ang sabi ni tatay, okay si nanay. Magtiwala lang tayo. Bakit? Di ka ba naniniwala kay tatay? Bakit naman niya sasabihin na okay si nanay kung hindi? Huwag kang mag-alala. Si tatay, hindi nun naiiwan si nanay. Todo bantay ngayon eh, di ba? I-update na lang tayo ni tatay pag may improvements na sa kalagayan ni nanay. Naghintay na lang tayo. So, Hindi ko talaga matake, Alice. Ano ba nangyari? Si Manuel at si Noah. Pinagkaisahan ako.
Can you believe it? Yung dating magkaribal, ngayon ano, nag-joint forces laban sa akin? Ano man kasi pinagagawa mo? Tinamayan ko na naman si Manuel. Kulit mo naman kasi, Fred eh. Tinataboy ka na ng asawa mo. Ikaw, lapit ka pa rin ng lapit. Hindi ako pwedeng huminto. Baka mamaya, maligat lang ako. Mawala na ako sa buhay ni Manuel. Hindi naman pwedeng... Hello? Hello? Sandali! Sandali! Noah, salamat. Bumalik ka. Actually, I'm supposed to be at the airport right now. Pero sabi mo sa message, urgent. So, may nangyari ba? May bad news ba na pinagit si Dr. Junella? Wala naman. Gusto ko lang kasi na pagising ni Felma, nandito ka. Bakit? Ikaw yung hinanap ni Felma pagising niya kanina. Anak yung daddy mo. Yung totoo mong daddy. Parang nakita ko siya kagabi. Jojo, ikaw nga ba yun? Meron tayong ilang expected na post-surgical effects. You will experience motor coordination issues, lalong-lalo sa hands and feet. Normal lang din na merong slurred or slow speech. We will assess her more once she's wide awake. Doc, mga anak ko, Jeffrey, Andrea, Colleen. Manuel, naaalala niya mga anak mo. Salamat sa Diyos. Nova? Belma? Nandito ako. Nova? Hindi mo ako iwan. Dami kong utang sa'yo. Daya. Belma? Siya nga pala. Nandito din si Manuel. Belma, Well, Tita! Ang gumawa mo, Tita! Belma. Amo ka! Belma? Belma? Relax lang po tayo.
Prepare for dialysis. 2.5 milligram IV. Now! Si Manuel yan, Telma. Telma, si Manuel yan. Papakalma ko lang, pasyente. Relax lang po. Relax lang tayo. Umalis na po. Dok, bakit po ganun? Galit na naman sa akin yung asawa ko eh. Kakatapos lang namin magkapatawaran. As I mentioned before, after surgery, normal lang talaga na magkaroon ng memory lapse or confusion ang pasyente. Because the frontal lobe helps with the memory, focus, and decision-making. Kaya naapektuhan ng pasyente temporarily. Don't you worry, because the brain is still healing. We usually see improvements over a few days or weeks. Dok, ano pa ba pwede namin gawin para mapabilis yung pagbalik ng memory niya? Okay, it would be better to have a calm and reassuring environment. Talk to her softly, remind her gently, and iwasan natin ang overstimulation. Dok, okay lang po ba na makita niya ako o mas lalo siyang mas-stress? Well, if makita ka niya ulit at matrigger siya ulit, better na iwasan mo muna. Anyway, imo-monitor naman namin ang progress niya, and we will update you if there's any updates. What's important is she's stable and recovering as expected. Balikan ko muna yung pasyente. Manuel, it is not your fault. At wala rin kasalanan si Felma. Tulad ng sinabi ng doktor, expected yung memory lapses after brain surgery. Ganun pa rin, naiintindihan ko naman eh. Sobrang sakit nung nagawa ko kay Felma. Kaya yun yung nagmarkang alaala sa kanya eh. Pare, ikaw na munang bahala sa kanya. Total, mas komportable siya sa'yo. Okay na sa akin yan. Eh, paano yun kung ayaw ka pa rin niya makita hanggang ngayon? Aminin ko pare, sobrang sakit. Ang bigat sa pakiramdam. Pero, mas matitiis ko na yun kaysa makita si Pelmo na nahihirapan, nagagalit. Susundin ko na lang yung sinabi ng doktor. Magpapakita na lang ako sa kanya pag hinanap niya ako. Nangako ako sa'yo noon na kapag nagkasakit ka, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Pwede ka lang magkasakit kung nasa tabi mo ko. Kasi gusto ko ako lang mag-aalaga sa'yo. Ako lang, wala nang iba. Pero paano kita aalagaan ngayon kung pinagtatabuyan mo naman ako dahil lang sa kasalanan na gawa ko sa'yo noon? Tay, ba't umuwi kayo agad? Iniwan niyo si nanay? Ayos lang yan. Nandun naman yung tito Noah niya eh. Siya na muna yung magbabantay sa nanay niyo. Tay, sigurado ko kayo okay lang yun sa inyo. Tay, gets naman po namin na okay na po kayo ni Tito Noah. Unexpected lang po na iiwan niyo po silang dalawa ron.
Ang totoo niyan kasi, anak, naapektuhan yung alaala ng nanay niyo. Ayaw na niya ako makita eh. Dahil dun sa Saudi. Kay Hazel? Hindi ko na siya maaalagaan. Maswerte yung si Noah. Magagandang alaala yung natatandaan ni Pelma sa kanya eh. Yan, basta kumain ka lang ng kumain para lumakas ka, ha? Ako muna. Sige. Ah. O yan. Ayaw na. Kukunti pa na nakain mo. O ganito na lang. Pag gusto mo pa o nagugutom ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Tay, huwag niyo na lang masyadong seryosohin. Naging epekto lang yun ng surgery ni nanay. Pero anak, karapat-dapat lang naman na sumbatan niya ako eh. Kasi hindi niya nagawa sa akin dati. Oh. Hindi niya nagawa ng harapan kasi alayo ko sa inyo eh. Tay, close chapter na po yun. Pero parang bumalik sa akin lahat ng kasalanan ko eh. Alam niyo, kahit wala ako noon, naramdaman ko kung gaano katindi yung paghihirap at kung gaano kalalim yung sakit na nabigay ko sa inyo. Kaya muli, mga anak, may hingi ako ng tawad sa inyo. Ay, napatawad naman namin kayo. Kami ni nanay. Tayo naman kayo panghinaan ng loob. Yung nangyayari kay nanay ngayon dahil yun sa sakit niya. Tayo mahal na mahal. अपने बच्चों को डरा सकी ना उनसे कह सकी कि अजान सुनो ये जनाबे वाला मस्जिदों किस मस्जिदों से सदाएं तौहीद बुलंद हो रही है। ये तुम थे, ये मौला अली थे और ये आज का एक किरदार और दिखाता हूँ। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ जरा दूर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम हो जनाबे वाला, ये मौला अली हैं और आज की दुनिया में मैं नाम नहीं लूंगा जनाबे वाला, और नाम नहीं लूंगा तो ये ले देंगे नाम। ये बैठे हैं जनाब वाला नाम लेने वाले हजरात, नाम तो नहीं लूंगा मगर मैं ये बता रहा हूँ कि वो मुसलमान भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं, एक बड़ी कुर्सी पर है वो आज भी। भाषण हो रहा है कलकत्ता में जनाब वाला, भाषण बड़ी जोरों पे हो रहा है। उनका भाषण बहुत अच्छा, वो बहुत जोरों पे रहता है। जब भाषण जोरों पे था, लाखों की पब्लिक थी, भाषण चल रहा था जनाब वाला, मुसलमान भी नहीं है, तुम तो मुसलमान भी थे मगर तुमने तो अजान को अजान तक नहीं समझा। गप्पे शप्पे करते रहे, तुम्हारे बच्चे गिल्ली डंडे खेलते रहे, अंटा पिलक खेलते रहे तुम्हारे बच्चे जनाब वाला। क्या नहीं किया तुम्हारे बच्चों ने, और तुम्हारी औरतें जनाब वाला गालियां ही देती रह गई घर में। और वो भाषण दे रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, बीच भाषण में करीब की एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आई, भाषण जनाबे वाला पूरे जोरों पर था, अचानक रुक गया, ठहर गए वो, और ठहर कर कहने लगे सुनो, पहले अजान की आवाज़ गौर से सुन लो, भाषण बाद में जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर जनाब वाला, मुसलमान नहीं मगर क्या एहतराम किया है अजान का। हो सकता है ये पद अजान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों, हो सकता है ये मनसब अजान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों। एक तुम हो मगर जनाबे वाला, तुम अजान को अजान कौन से समाज की बातें करते हो। कहा है तुम्हारा समाज कुछ भी तो नहीं जनाब वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज, इस समाज को भी देख लो जनाब वाला। ये वकील साहब हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब ने कह दिया अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जरा सर तो छुपा लेते, तो वकील साहब जनाब वाला, वकील साहब मौलवी के सीने पे बैठ गया कि तुम लोगों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला। ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से इन्हें दुआ दे दे के इंजीनियर बनाया, हम ही ने दुआएं करते रहे,
मौला इन्हें सिविल इंजीनियर बना दे, सिविल इंजीनियर बना दे, मगर ये बन गया कंप्यूटर का इंजीनियर, हाई टेक, पाई टेक, साई टेक, कौन कौन सा टेक हो गया ये। हजरात मोहतरम वो इस सबको बनाने के बाद में हमने फिर जनाब इसने क्या किया, ये टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, आस्तीन खुली हुई थी, टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, पहुंच गए हमने कहा भैया टी शर्ट में देखो नमाज है ये, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह, जरा कायदे से ही खड़े हो जाओ। मामूली से अधिकारियों के पास जाते हो तो भी तुम बड़े अंदाज में जाते हो, डिसिप्लिन के साथ जाते, ये तो अल्लाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। तो इंजीनियर जनाब वाला उसकी आंखों से तो शोले निकल पड़े, आंखें लाल हो गई, बोले मौलवी हो तुमने, दुकानें चलो चलो के इस्लाम का सर्वनाश कर डाला है। हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, ये नमाज पढ़ने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे यही पता नहीं है कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, सीधा रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, और जनाब वाला इतना बड़ा सूरमा कि गाँव में किसी की चलने नहीं देता, मगर इससे कुरान पढ़ने नहीं आता है, और इससे कहो कुरान सीख ले तो जनाब वाला उल्टा कहता हम तक को बट रह गए, तुम ही बतेरे पड़े हुए हो, हम तक को बट रह गए, तुम तो बतेरे पड़े हुए हो, और उल्टी धमकी देता है इमाम को जनाब वाला, और वहीं से दुश्मनी का आगाज भी कर लेता है। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ, कौन सा समाज है ये जनाब वाला, वो समाज सुभान अल्लाह, ऐसे ना ऐसे, इस यही मौला अली है, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तीर लग गया है बड़ा गहरा, हज़रात मोहतरम सारे सहाबाए किराम, मुस्तफ़ा जान रहमत के असहाब, मौलाए कायनात के दरबार में हज़रत मोहतरम तीर निकालने के लिए कहा, तीर निकल नहीं पाएगा, दर्द बेहद हो रहा है, फैसला हुआ कि अभी मत निकालो, जब मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हो ठीक उसी टाइम में तीर निकाल लेंगे। इतने महव हो के नमाज पढ़ते कि न दुनिया की खबर न दुनिया वालों की खबर। हज़रात जैसे ही मौलाए कायनात ने नियत बांधी, खुदा की कसम नमाज तो इसी शान से पढ़नी चाहिए कि या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये समझना चाहिए। जब मौलाए कायनात नमाज में खो गए, महव हो गए, मुनहमिक हो गए, रिश्ता टूट गया दुनिया से, तो लोग जल्दी से आए, और वो तीर जो जनाबे वाला किसी कल निकलने का नाम नहीं लेता था, वो जो शिद्दत अलम और शिद्दत दर्द से जनाबे वाला मौला अली को हिलाए देता था, इस तीर को इन सब ने इकट्ठे होकर खींच लिया, मगर मौलाए कायनात को एहसास तक नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया, और सलाम फेरने के बाद जब लोगों की बड़ी तादाद देखी, हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग तीर निकालने आए हो? तो जनाब वाला मुस्कुरा के सब बोले, हुजूर तीर तो निकाला भी जा चुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शानदार नमाज़ी हैं हजरत मोहतरम, ये है नमाज़ी मुस्तफ़ा जान रहमत, अमामे से नमाज पढ़ रहे हैं, वकील साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमामे से पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं। किस समाज की बात कर रहे हो जनाबे वाला? ये समाज जनाबे वाला, सुबह अल्लाह अपना रहम फरमाए। अरे जीने का हक नहीं है इस समाज को, जैसे कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद मर गई, जैसे कौम हैकत तबाह हो गई, तौबा तो ताराज कर दिया मेरे अल्लाह ने, सिस्टम बदल दिए, जहानी से जहानी कर डाला सारे समाजों को। ऐसे ही तुम्हें भी जीने का हक नहीं है जमीन पर जनाब, नहीं, यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। तुम भी जिंदगी के हक खो चुके हो। कौन सी वजह है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए? किस वजह से जनाबे वाला तुम्हें जिंदगी दी जाए? मगर इसके बावजूद कि तुम जीने के हक खो चुके हो, फिर भी बंगलों में जीते हो, आलीशान जिंदगी जीते हो, और जनाब कर्रो फर के साथ जीते हो। जानते हो क्या वजह है इसकी? इसकी एक ही वजह है, मर जाते, बर्बाद हो जाते, तो भाला हो जाते, तख्त ताराज हो जाते, आंधियां चलती उड़ा ले जाती, तूफान आते, और जनाबे वाला खसो खाशाक की तरफ बहा के ले जाते। मगर हे मुसलमानों, अगर हम जी रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा उन उम्मतों में नहीं थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे उन उम्मतों के पास मुस्तफा कहाँ थे? मुस्तफा तो जनाबे वाला खुदा की कसम 1400 साल पहले धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। बेशक धरती के पर्दे पे 1400 साल पहले। ये अलग बात है, वो पैगंबर है अव्वलीन और आखरीन के, तवज्जो है। मगर ये शरफ हमें मिला कि मुस्तफा हमारे बीच में है। और से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला मेरा अल्लाह फरमाता, मार देता, तबाह कर देता, मिटा देता, कोई नहीं बचता। इन बेनमाजियों को, इन बदतमीजों को, इन बदतहजीबों को, इन अनकल्चर्ड को, इनको ये बद किरदारों को, इन बद अखलाकों को, ये इन्हें जीने का नहीं जीते, कोई नहीं जीता, एक साथ खत्म कर देता, मगर नहीं। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह बता दी अल्लाह ने, इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। क्या कहने हैं, वाह वाह। तो आज जो हम जनाब वाला सांसें ले रहे हैं, हमारे मुस्तफ़ा का एहसान है। इसका मतलब आमिना का लाल हमारे बीच में सलामत है, वरना हम सलामत नहीं होते। हमारा सलामत होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। ये तजर्बा है कि हमारा नबी सलामत है। हजरात मोहतरम, इसलिए हम सलामत हैं। इसलिए सीना चौड़ा करके कहो कि हमारा नबी सलामत है। कोई पूछने लगे कि कलमा पढ़ने वाले भी अलग अलग रास्ते पे चल पड़े हैं, किसी का रास्ता कोई है, किसी का रास्ता कोई है। तो कलमा पढ़ने वाला ही कोई पूछ सकता है कि नबी जिंदा है, तो इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो जन प्रूफ बहुत मांगते हैं ना, कलमा पढ़ने वाले भी कोई कम मांगते हैं क्या प्रूफ? कलमा पढ़ने वाले तो बहुत प्रूफ मांगते हैं जनाब वाला। ये बताओ नबी जिंदा है तो इसकी दलील क्या है? तो सीधे कहो, इसकी दलील इतनी है, हमारा नबी जिंदा है। ये दलील पूछते हो तो दलील ये है हमारा नबी जिंदा है, और दलील ये है कि हम जैसे बदअमल जिंदा हैं। जी बेशक। हमारा जिंदा होना इस बात की दलील है कि हमारा नबी हमारे दरमियान मौजूद है, वरना अगर नबी ना होते तो हम कब के खत्म हो गए।